Hey guys, welcome to my YouTube channel. And today, thank you so much first of all for like coming to my podcast for my YouTube channel. ये पहला kind of big star cast जैसा इंटरव्यू है मेरे खुद के चैनल के लिए और स्टार का एग्जैक्टली लाइक मैं तो स्टार कास्ट ही समझूंगा यार तुम एक फीचर फिल्म की लाइक पूरा कास्ट आए हैं सो लाइक मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग आए सो गाइस थैंक यू फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय चैनल एंड लाइक पहली बात तो आज का दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि आज का दिन लाइक इट्स द थर्ड ईयर Oh, wow. एनिवर्सरी फॉर माय चैनल Oh, सो nice. आप लोग उस दिन पे आए कंग्रेचुलेशंस इट्स थैंक यू सो मच लाइक उस दिन पे आए Congratulations, Sanket. Yes, thank you so much, कंग्रेचुलेशंस Sachin. Thank you so much, everyone. So yeah, let's get right into it. Like without wasting any time. So Aditya, आपसे शुरू करते हैं कि आप पहले फराज like फिल्म से कैसे जुड़े? Obviously, Right. would you tell us about your experience? So first up, I just want to say thank you for having us, Sanket. And I think ऐसे लोगों के साथ बात करने में मजा अलग ही आता है. Where it's not ऐसा नहीं है कि तुम पेशे से कोई जर्नलिस्ट हो या कुछ ऐसा. It is the approach is coming from a love for cinema, which is always fun to talk about, and it's always a valuable experience, not just for hopefully the interviewer but also for us. So thank you for that. Yeah, as far as Faraz is concerned, I had I'd met Hansal sir, and he told me about the story that he wanted to make. And I think the first time we met, only उनके साथ एक बात हुई थी where he had mentioned कि it is about this terrorist attack, and I want you to play one of the five boys who stormed the cafe. But from that first meeting itself, he was very clear कि यार ये तुम्हारे regular नारेबाज cinematic terrorists नहीं हो. He is going to try to get to the heart of who they are, sort of try to really understand them as human beings, present them truly as they are, which is lost boys, very driven, sometimes very intelligent, sometimes very capable, but they've been guided, they've been given the wrong guidance, the wrong companionship, and they have been led down this dark path that has made them commit the most inhumane acts, but they are still human beings. So that was my first meeting with Hansal sir. The moment I met him, matlab, for somebody like me with my relative lack of experience, to be given the opportunity to work with somebody like a Hansal Mehta, honestly, I would have jumped at it no matter what he had said in that meeting. But after leaving that meeting, I was like, boss, this is the, this is the kind मैं of ही हूँ part of. So that was the thing. And then like when ये सब हमारे सब भाई लोग जुड़ गए, then it just became it really became a familial experience. बहुत बहुत ज़्यादा ही मजा आया. So yeah, I mean, I'm just thankful to Hansal sir for giving us this opportunity, bringing us all together under one roof. It was amazing. Yeah. So next up, Ninad, आपका कैसा रहा journey? Like, how did you get into this film? This film actually was the most random experiences for me of it happening because this film was technically my first audition I've ever given in my life. Oh wow. And I gave the audition and I get a call from Mukesh Chavra casting company, and we are told that you've been shortlisted, so please come and just meet us and we'll see what has to be done. तो अब इस ऑडिशन के बाद शॉर्टलिस्ट के लिए हम लोग पहुंचे, एंड वंस वी रीच देयर आई सी लाइक 5 great actor looking guys sitting outside the office all nervous and like उनका continuous ये चल रहा है, and even I got stressed कि मतलब बेंचो sorry can I have No, it's okay.
but मतलब बेसिकली जैसा जस्ट ये लक बाय चांस में जैसा दिखाया था वैसे ही काइंड ऑफ जो luck by chance is ज़्यादा. I go there and I see these guys, and I saw Sachin there, Jatin wasn't there, Harshal was there, and the guy who's playing Faraz's brother was there, and we were sitting outside. Honestly. Resham was there. Everyone was sitting there. Yeah, Amir was there. Resham. Everyone. Basically, Resham, everyone was sitting outside, and we were just waiting. And I knew Resham from pehle, so we were just talking there, ki ye kya ho raha hai, whatever. We were just going through the whole process together. And then we could get called inside the room, and that's when Mukesh sir, and thanks to him, we got this thing in place. And Mukesh sir and Hansal sir just walk in, and they're like, just to burst the bubble, you guys are selected. आप लोग है ये एनडीए साइन कर लो, ये कर लो, उसके बाद आपको स्क्रिप्ट मिल जाएगी, ये होगा वो होगा. एंड it was just amazing, that experience. Till date I would say that those were the best 14 days, 16 days guys, Same. 17 Somewhat, years. yeah. of my life. They were the best 17 days, 16 days of my life. Learned everything, learned a side of cinema which I had never explored. It was met these beautiful human beings. बहुत ही interesting एक family, which is what Aditya said, like a familial bond which happened on shoot. It was just best. Wow, that's great, bro. Like Jatin, आपका कैसा रहा था जर्नी टू लाइक ये फिल्म में जुड़ने के लिए? मेरे साथ भी यार ऐसे ही हुआ था कि मैं फिल्म स्कूल से पास आउट हुआ 2019. उसके बाद बॉम्बे आया. बॉम्बे आने के बाद पैंडेमिक हो गया. पैंडेमिक में फिर सब लोग घर चले गए. सो 21 में मैं आया था तो एक मुकेश छाबड़ा जी को ही एक ऑडिशन के लिए टेस्ट दिया था. शो बन रहा था टब्बर. तो उन्होंने मुझे टेस्ट करा हंसल सर की फिल्म के लिए. मैंने कहा मेरा कहाँ ही होने वाला है, तो दिया टेस्ट. उसके बाद उन्होंने बोला कल, मतलब आई थिंक एक दिन बाद ही उन्होंने बोला था कि कल हम लोग मिल रहे हैं, तो आप लोग 12 बजे आ जाओ. तो मैंने कहा मैं सिलेक्टेड हूँ, क्या बोल रहे हो, स्मोकिंग अप विद माय फ्रेंड्स. तो मैंने कहा कल, अच्छा. तो ऐसे ही हुआ. फिर उसके बाद मैं कट टू बॉम्बे आया अपने बैग के साथ सीधा मुकेश छाबड़ा जी के ऑफिस के बाहर, कि तो वहाँ पे प्रोड्यूसर्स थे, तो उन लोगों के साथ एनडीए साइन वगैरह हुआ. ऐसे फिल्म मिल गई. और उसके बाद मैं पूरे ऑटो वाले को बोल रहा हूँ कि आपको पता है मेरे को फिल्म मिल गई है. मेरे को फिल्म, मतलब ऐसे. वाओ, I can relate to that experience. Just by the way, जब भी वहाँ पे, just when we walked inside the room, we saw Sachin Lalwani with this huge ass beard और लंबे बाल, और वो वहाँ पे बैठा है. मैं बोला टेररिस्ट का फिल्म है तो यही है पक्का, 100%, no doubt. But हाँ, मतलब ऐसे ही reactions. मतलब I am still working with Gattu sir, and उसमें first call was him after my parents, of course. And उनको ये बोला तो बोला अच्छा तू ऑफिस आ, मेरे को दिखा, ऑडिशन दिखा. एंड मजेदार लाइफ. वाओ. सचिन, आपका कैसा रहा था? लाइक जस्ट कॉलेज के बाद मुझे नहीं लगा था कि सिंस लाइक ऑब्वियसली आप लोग को शायद से नहीं पता होगा, लेकिन सचिन एंड आई आर कॉलेज मेट्स. और कॉलेज में तो मुझे जरा भी नहीं पता था कि सचिन कोई फिल्म में आएगा. और फिर जाके अचानक देखा सचिन इन अ फिल्म, और ओके ये अपना ही सचिन है कि पहले मैंने इंस्टाग्राम, वो भी हंसल मेहता की फिल्म. एग्जैक्टली. और मैं फिर सचिन से कंफर्म किया, उसने बोला हाँ भाई मैं ही हूँ वो. मतलब वाह, मतलब अपने जैन के लोग कहाँ पहुंच रहे हैं. तो वाह, मतलब जो प्राउड फीलिंग हुआ था यार सच में सचिन. सो वही जर्नी जाननी थी कि सचिन कभी कैसा हुआ यार आपके साथ. So actually, I've been giving auditions at NCCC since I think 2015, and तब से मैंने पहली बार इंटरव्यू दिया था. फिर मुझे 2019 में बताया गया था आई थिंक कि एक ऑडिशन आने वाला है वगैरह, बी रेडी एंड ऑल.
and I gave an audition with Harshal. And हम ने audition दिया था March of 2020 में, I believe, March or February. And we had like a second audition, which was essentially a workshop. And Mukesh sir थे वहाँ पर, and he's closely working with all the actors. And उनमें से shortlist होने वाले थे. फिर मुझे कहा था कि तू शॉर्ट, मेरा यही लुक था अबाउट, इतनी बियर्ड मे बी थोड़ी ज्यादा, एंड इससे थोड़े छोटे बाल, यू नो, थोड़े छोटे, एंड मुझे कहा था अपना लुक तू प्रिजर्व करके रखना, डोंट कट योर हेयर, डोंट कट योर बियर्ड. एंड फिर लॉकडाउन पड़ गया. तो आई वॉज लाइक, मैं अपनी कैंची से हाथ नहीं लगाने वाला अपने बालों को, ना ही अपनी दाढ़ी को. मुझे ये नहीं चाहिए कि मेरी पहली फिल्म मेरे को ऐसे मिल जाए एंड जस्ट बिकॉज मेरा लुक तभी वो टाइम पे नहीं बैठ रहा, कुछ इशू हो जाए. तो मैंने यहाँ हाथ नहीं लगाया, यहाँ हाथ नहीं लगाया फॉर नियरली अ ईयर. एंड बीच में एक और सेल्फ टेस्ट मैंने भेजा था, आई थिंक अराउंड जुलाई ऑफ 2020. 2021 में जतिन के साथ ही आई गॉट टू नो, जतिन निनाद एंड ऑल के साथ ही आई गॉट टू नो दैट वी आर सिलेक्टेड. एंड जैसे वो बता रहा था कि वो रिक्शा वालों को बता रहा था कि भाई आई एम सिलेक्टेड एंड ऑल, मेरी भी वही फीलिंग थी, बिकॉज यू नो ये वर्सोवा में हुआ. सॉरी, नहीं नहीं बोलो. मेरे हाँ, को तो समझ में आ गया था लाइव है, हम बात कर नहीं रहे. ओके, सो वर्सोवा में ये हुआ था. एंड फिर आई जस्ट सेड यार, दिस डिजर्व्स, दिस कॉल्स फॉर सेलिब्रेशन. एंड दोपहर 2 बजे ऑन लाइक अ ट्यूसडे, क्या ही करूं मैं. सो आई स्टार्टेड कॉलिंग अप सम ऑफ माय क्लोज फ्रेंड्स. आई टुक अ रिक्शा ऑल द वे टू बैंड्रा, एंड बस हवा खा रहा था समर्स में. एंड दैट वाज जस्ट माय वे ऑफ सेलिब्रेटिंग. लहरा दो, लहरा दो. Wow, Yeah, and yeah, that's it's a massive opportunity that we have gotten from Hansal sir, and it's just an honor to work with him. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. और सच में लाइक मैंने स्कैम देखा जब भी, फिर शाहिद देखा, और इतने सारे देखे, सब उनके फैन Shit. बन चुके थे. और ऑब्वियसली वुड बी अ ड्रीम कम ट्रू कि जो हंसल मेहता के फिल्म में ऐसा लाइक कोई रोल प्ले कर रहा है यार, लाइक सच में. और इसलिए तो निनाद, आप बता रहे थे कि लाइक कैसे आपने बहुत सारी चीजें सीखी. सो आदित्य, आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने क्या-क्या सीखा ऑन द सेट्स जब आप लाइक काम कर रहे थे हंसल मेहता जी के साथ वैसे, और उनके पूरे कास्ट के साथ, लाइक सॉरी क्रू के साथ भी, क्या इन जनरल एक्सपीरियंस रहा ऑन सेट, और उनके साथ क्या सीखा? यार क्या सीखा मतलब, तो तुम्हारा इंटरव्यू का ड्यूरेशन कम पड़ जाएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट. नहीं, on a very serious note यार, because not just with somebody like him ना यार, you don't learn just acting or filmmaking and all of that. The human being that he is, the way he deals with people, the respect that he gives them, the way, मतलब यार, he is a man who I think since Faraz being the first one, I think the next whatever 3 or 4 projects that he's done, Big stars, big his stars. feelings are the same. His DOP is more or less the same, unless he wants something in particular that's different, like he did for one of his projects. Everyone, all of his HODs, his makeup, his costumes, all of them are the same. This is because they love working with him. He is able to trust them and he respects them. You know, तो वो जो था ना यार उनके साथ काम करके यार, कि तुम, the idea that you need to be like, there is, what I realized after working with him is that, you know, people say, "Arey, to make art, you have to be cruel sometimes," and all of those things. You don't. Losing your temper is one thing. Being an asshole is another thing. You know, you don't have to be an asshole to make good art. You can be a perfectly fine gentleman or woman or whatever and make great art while getting along with the people you collaborate with. That does not mean that there are no misunderstandings or disagreements. Of course, there are. But if both sides approach the project knowing that they're in it to improve the project, and they know that the intention is very clear, and that the whatever the disagreement is not personal, it's only to do with the project,
you can have the most sanguine, most beautiful working relationship, which Hansal sir has built with all of his collaborators across the board. You see, why does he like people like Rajkumar Rao sir, Pratik Gandhi sir, all of these people? Why do they continue to work with him? Why are they looking out for opportunities to work with him? You know, it's not necessarily just because of the films he makes. Because look, a lot of people make a lot of good films, but the joy of working on a film with Hansal sir, and anyone will tell you this, anyone will tell you this who's worked with him, is unparalleled. It's unique in its own way. You know, like our working process also. It was like, yeah, we had a benevolent father on set. He would allow us to explore. He would trust us. He would give us the responsibility. And then when it was something he wanted changed or whatever, he would, adjust certain things and all of that. But you were bringing something to the table, and that is being appreciated. It's being encouraged. So that, I would say, more than anything, is the thing And that it I was love. to like the extent that Aditya actually told us, कि now that you've worked with Hansal sir, you've been spoiled. Yeah, yeah. Because हर set का work environment ऐसा नहीं होगा. यार, और ये तो वाकई में एक्सेप्शनल था, बिकॉज हम लोग ने वी वर इन अ कोविड बबल. इट वाज अ होल क्रू. नॉर्मली क्या होता है यार, आप इट्स जस्ट Actors. sad parts of our industry is that some of your HODs, your primary cast, sometimes in a different place. Your crew is in a different place. All of those things when you're staying in an outdoor location. This time, because it was a COVID bubble, we were all together, all on the same floors, all eating at the same place. The set that was built was in the grounds of the hotel we were in. We were shooting chronologically. We were starting most days. Hansal sir didn't shoot more than 10 hours. So we were well Yeah. rested. So we were raring to go. It was just a fabulous experience. और ऐसा experience तो यार, मतलब इनको बोलना छोड़ो, मैं खुद को भी वही कह रहा था कि यार ऐसा तो कभी मिलने वाला है नहीं. तो just value it while it's happening. Wow. That is the first thing. That is the first thing Aditya had called and said कि मतलब ये फिल्म Yeah. में आदत बिगाड़ दी है भाई, आदत बिगाड़ दी है. मैं बोल रहा हूँ, बिगड़ गई आदत. इसके बाद और नहीं मिलने ये भी वाला था, फिर से. और ये भी था यार, स्कैम हिट होने के बाद आदित्य ने बहुत अच्छी बात कही थी. पोस्ट पे लिखा था सोशल नेटवर्क, इस पे इंस्टाग्राम पे, कि यार हंसल सर चाहते तो किसी भी बड़े एक्टर के साथ काम कर सकते थे ना. मतलब उन्होंने हमको चूज करा ये फराज की कहानी कहने के लिए. Absolutely. तो ये Yeah, the faith he puts in people is unreal, and he's very the gentle. freedom that you get as an actor to explore the space. Because what happened was we had done readings and a workshop for about 2 or 3 months, I believe. And बीच में I think second wave आया था. तभी हम online भी मिलते थे, हम 5. And we would discuss and we would watch films that would sort of put us in a space like that, where you have a hostage drama for like, and you're waiting and waiting until sunrise. And which film was that? The Netflix French film that you had recommended, Aditya? Yeah, there was this film called Nocturama. Very, very interesting. Nocturama. Sanket, इसने देखी yeah, Yeah. one. क्या बोल रहा? Sorry, Jatin was saying something. He got stuck, I think. हाँ. But yeah, नहीं यार, very, very interesting film. Of course, that's making a rather different point and all of that. But that feeling of the long night was well captured in that film. Oh, okay. Dog Day Afternoon, I think we watched together. Dog Day Yeah, Afternoon. yeah. Wow. Classic. Just the film. day before the And this- first day of the shoot. This is literally like all the 5 sitting in one line और देख रहे हैं वो film. मतलब एक दूसरे को देख रहे हैं. This is technically what मतलब he's helpless and there are multiple emotions that go on in the film. So like too good. वाह, सही है. एक चीज पूछनी थी आप लोगों से, आप चारों से, कि जस्ट रिलीज होने के बाद, आफ्टर ऑब्वियसली थिएट्रिकल रिलीज भी और नेटफ्लिक्स रिलीज होने के बाद भी, क्या रिस्पॉन्स रहा है आपको पर्सनली? कैसा लग रहा है कि लाइक ऑडियंस कैसा रिएक्ट कर रही है अगले, या कैसे ये फिल्म को लाइक कैसे रिसेप्शन मिल रहा है और आप लोग को पर्सनली कैसा लाइक रिएक्शन रिसेप्शन मिल रहा है? जस्ट आप लोग से मैं पूछना चाहूंगा. जतिन, यू कैन स्टार्ट विद दैट. यार रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा, बहुत
बहुत अच्छा मिल रहा है, जिन लोगों से एक्सपेक्टेड नहीं था वो लोग भी मतलब डीएम कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा काम है, जितना भी है आपने अच्छा करा है। फिल्म जो हमारी बात कर रही है गुड मुस्लिम बैड मुस्लिम के बारे में, वो कनेक्ट हो पा रहा है। आई थिंक रिस्पॉन्स तो काफी अच्छा मिल रहा है, इतना मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, बट बहुत अच्छा। Okay. मतलब ये जब से नेटफ्लिक्स पे आया है तब से तो बहुत अच्छे, मतलब हर, तो इसका Wow. आपके Okay. पसंदीदा बिल्डिंग प्लेटफॉर्म पे। बिल्डिंग बिल्डिंग वाले पहचान रहे तुम्हें? अरे उन्होंने बोला कि मैं वेद, कोई फिल्म आई है क्या, वेद देखने जा रहे थे या वेद देखने जा रहे थे, तो हम लोग फराज में वेड बैठ गए। वेड वेड, हाँ हाँ वेड। वेल था ना? हाँ नहीं नहीं, हाँ, वेड, तो वेड तो उधर वेड है, तुम्हारा वेड है। खा दोनों है, द रितेश वेल है देशमुख और का। वेड भी कर लो, है। यही यही डिस्कस करते हैं अभी, चलो। सॉरी सॉरी, यस। तो वो फिल्म देखने गए थे, तो वो उन्होंने हमारी फिल्म में बैठ गए, तो वो कह रहे आपका खाना खाने वाला सीन था, अरे आप भी थे, बाल लंबे है क्या आपके, तो ऐसे ऐसे कह रहे थे। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा फिर आप उठ गए, हाँ वेट देखने जाना था। तो ऐसे ऐसे करके वो तो हम लोग उठ गए। आदित्य, आपका, आपको कैसा? यार कमाल कमाल ही रहा है यार रिस्पॉन्स, मतलब ओवरवेलमिंग, हार्टनिंग। एक्चुअली यार मेन तो क्या है ना, that once it's on Netflix, हंसल सर ने भी पोस्ट डाला था कि it's found its rightful home. Yeah, the thing was, we were actually waiting for this moment because really, this is not necessarily the kind of film people are going to cinemas to watch. Our film was also very limited release, रात को release हुई थी, तो अब जो लोग बैठ के देख रहे हैं and the इवन कम response that शोज थे ना, हमारे शोज बहुत कम थे, तो इसलिए ना तो बराबर ही थे, like only 5 big cities, हम्म, only one show in every big theater, that too at 10:30, 11 p.m. So हाँ, really becomes, my mother couldn't go watch the film in the theaters with her friends ओ if she wanted, just because that's what's the situation, no? But now that it's on Netflix, yeah, the people are watching it, people are loving it. अब देखो यार, just as we speak, it's trending now on #1 in India. Number one film, yes. Yeah. I mean, it's, of सही course, भाई, it's not a big deal for a lot of people, but for us, it really is. हाँ एग्जैक्टली, Yeah. It's sort of coming up from a word of mouth, like from the word of mouth. It is rising organically. It's not even like there was some big P&A push before the Netflix drop or anything of that sort. So to still see it find its viewership, that is honestly the best thing we can hope for. And I just hope that more and more people see it. To love and to hate a film is perfectly natural, but watching it is the thing that every artist desires, that you watch तो their work. आपको जहान को भी बुलाना था, उसने भी बहुत अच्छा काम करा है, बट आपने जहान ने उनको हाँ, Zan, हाँ Yeah. I was planning कि फराज 5, but हर्षल I think लास्ट में ड्रॉप होगी क्योंकि उनको एक शूट में जाना था, सो इसलिए था जो मैं बोला ओके इट्स ओके, लाइक एटलीस्ट 4 आ पाए वो भी एक्चुअली बहुत अच्छा होगा, सो हर्षल नहीं आ पाए अनफॉर्चुनेटली, बट या इट्स स्टिल वी आर सेलिब्रेटिंग दिस फिल्म ओवर हियर। सो या सचिन, आपको कैसा लगा, लाइक जस्ट द रिसेप्शन ऑफ इट? I mean, bro, मेरा नाम इंटरनेट पे है, उससे ज्यादा क्या बोलूं मैं? So, and that also uh, not for something nefarious like a drug bust or a That's sex all tape. the reason. yet. So, yeah, it's an unreal experience because Netflix के नीचे वहाँ what's that called, credits में तुम्हारा नाम आता है, and you can actually click on it and उसमें दिखता है फराज. That's a big deal, and I'm especially after the Netflix release, as Jatin said, we've been getting a great amount of response. Like today morning, I woke up with like 103 fever, and I just opened my Instagram, and I got 2 messages from people I have never heard of before, and they just messaged me that, oh, I saw Faraz, and I'm from Pakistan, I'm from Delhi, and the kind of love and support you get, and the effort that they've taken to actually message someone, and एंडोर्फिन रश हो गया कि पूरा फीवर ही चले गया ना। 103 से 101 पे आया। Yeah. निनाद, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था फिर, लाइक फिल्म के रिलीज के बाद?
फिल्म के रिलीज के बाद the most special thing that happened was once me and my parents, we walk out of the cinema and my mother has teary eyes and she just says, I'm super proud of you, whatever you have done. What just she was just like speechless, loss of words वाला जो होता है ना feeling, but बहुत खुश होता है, आंखों में बहुत खुशी होती है, but वो कुछ बोल नहीं पाते हो. वो मैंने मेरी माँ के आंखों में देखा, so I just was like, this is what I did this for, because my dad is like, both of them were just like very happy, and they all of this, whatever I'm doing in life, is just for them. So at the end of the day, they were happy. So सच लाइक मुझे खुद को अच्छा लगा जब भी मैं लाइक सचिन ने मुझे इनवाइट किया था. आप लोग सब देखे थे, आदित्य, जतिन, निनाद सब देखे थे मुझे उस स्क्रीनिंग में, तभी तो मैं किसको पहचानता नहीं था. लाइक मैंने सभी को देखा वहां पे, और सचिन को देख रहा था मैं, वाह, मतलब मैं खुद चीयर कर रहा था कि ओ सचिन आया, ओ वाह. और फिर जाके थैंकफुली उससे भी मिला, और लाइक आप सभी लोग को देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा सर. लाइक आई क्वाइट लव द फिल्म. So just to wrap this thing up, एक last सवाल है आप सभी से. Since ये एक cinema like oriented channel है, not just about interviews but it's mainly about films. I think like हाँ, आप लोग सबसे एक शुरू करता हूँ. आदित्य, पहला आप होगा एक जतिन. Oh yes, sure. Okay, Jatin. Please, Yes, Jatin. set the चालू हो benchmark. जाइए. After Jatin's taste, it only goes lower. Because Oh. Jatin Yeah, I think he can close the show. Or Yeah. else just do it the other way around. Jatin last देगा, because अच्छा वो चले ही गया Jatin. नहीं शर्मा वो गया. लिस्ट खोल रहा है, कौन सी बोलूं आज मैं. But yeah, yes. So आपने निनाद आपने ही नाम दिया था जतिन का, तो आपसे ही शुरू करते हैं. ऐसे आपने आइडिया दिया कि लाइक नीचे से शुरू Yeah. करना चाहिए, तो आपसे ही शुरू Sorry. करते हैं कि एक फिल्म रिकमेंडेशन जस्ट कौन सी भी अच्छी दिखी हो, बहुत अच्छी लगी हो, रिसेंटली देखी जो बहुत अच्छी लगी हो. यार Recently मेरे देखी और को बहुत अच्छी मेरी लगी. फेवरेट किससे पूछूं यार. चालू हो जाओ जी. कर लो तुम. नहीं सॉरी यार, मेरा इंटरनेट हाँ, नहीं चल कर रहा. लो पहले. बताओ, बोलो ना यार. कर लो, हम लोग नेक्स्ट स्ट्रीम पे बोलेंगे, तुम शुरू रखो. नहीं बोलो ना यार, बोलो ना. मेरे को नहीं, मेरा बोलो. इंटरनेट नहीं चल रहा, तो मैं चेक करने गया था. क्या लिस्ट? यार एक फेवरेट फिल्म ना, माइकल हैनेके का फिल्म देखा तुम आप लोगों ने? कौन सी? तो इसाबेला हापर्ट का एक फिल्म है, पियानो टीचर. द पियानो टीचर. काफी यस, फेवरेट फिल्म है, तो मैं वही सजेस्ट करना चाहूँगा. बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया फिल्म है. नेक्स्ट निनाद, आप. अभी recently I watched a film, not recently, थोड़े टाइम पहले, but it's Akira Kurosawa's High and Low. High and Low. Which is, मतलब मैं देख के I understood where Parasite came from. So if you guys are interested, just Absolutely amazing film है वो. Like I think मेरे लिए Akira Kurosawa की best film है High and Low. So yeah, next आदित्य, आपकी. यार मैं कोएन ब्रदर्स का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मुझे एक्चुअली उनकी एक पिक्चर है द सीरियस मैन करके. तो उसमें एक्चुअली द ब्यूटी ऑफ दैट फिल्म इज कि मैंने जितनी भी बार आप हर पिक्चर देखते हो, यू आर एबल टू अनपैक इट इन सम वे, और एबल टू एनालाइज इट इन सम वे, सी व्हाई इट्स वर्किंग, सी व्हाई इट्स नॉट वर्किंग, सी व्हाट ट्रिक्स आर बीइंग प्लेड. यार ये फिल्म में मुझे पहले मैंने 2-3 बार जब देखी, मुझे तो समझ में नहीं आया कि क्या जादू किया जा रहा है, क्योंकि आई कुड नॉट सी ओनली. नॉर्मली आप कोई भी पिक्चर देखो, यू कैन सी द गियर्स, you can see the working of it if you are, if you spend time in films and all of that. But इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा था, why is this working, why does this have a hold on me, but I'm not able to understand, I'm not able to see how he's doing it or how they are doing it. So मुझे वो aspect कमाल का लगा, because the magic of the movies goes away once you start working in movies, because then you're analyzing everything, you're studying everything. But for that brief moment while watching the magic of the film, magic of movies kind of came back. So I would say A Serious Man is just something to watch just for the experience it provides. Yeah. Absolutely. Wow. Say, Sachin? I think one film that I would recommend always would be Interstellar.
And Wow. I just recently, I've seen it like 6 or 7 times, and just recently, I think about a month ago, I watched it after like 3 years, and it was like I was watching it all over again. The My favorite part about it is that even though there are these high stakes of, the world ending, the waves, the spaceship and stuff, what really hits you is the simple emotions of it, the father-daughter bond, and just survival of us as a species. Absolutely. Wow. That's great. So, guys, thank you so much for coming to my channel, YouTube channel, and like the Thank third you, year bro, for having celebration. us, Thank you and especially on such a congratulations. day. I've been Exactly. following Like, you since I Thank think you. we graduated. yes. Yeah. Yes, आई थिंक और मैं सून फराज पे एक डिस्कशन भी करने वाला हूँ आई थिंक दिस वीक लाइक हम लोग मैं और मेरे एक दोस्त करने वाले सो होप यू गाइज वॉच दैट वीडियो एज वेल एंड For sure. थैंक यू सो मच Definitely. फॉर Thank you. coming over here and thank you so much. Done Thank deal. you for having us. Congratulations.